अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी कंपेनियन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नताशा और आज हमारे शो का हेल्थ डे है। आज हमने सोचा क्यों ना हम एक बात करें about a subject which I know many of you are passionate about and based on popular demand from many of our viewers, आप कईयों ने हमें फोन किया, ईमेल किया और खास करके खत भी लिखे और कहा नताशा please cover this topic again because we are incredibly passionate and want to know more, and so that's why on today's show we'll be talking all about Ayurveda. अगर आपका कोई भी सवाल हो इसके मुतालिक do pick up the phone and give us a call. हमारे फ्री फोन नंबर्स अलग अलग मुल्कों के अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे आप जानते ही हैं वो मुफ्त हैं लेकिन चार्जेस में अप्लाई अगर आप मोबाइल फोन से हमसे बात करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि Ayurveda is a very lifelong practice which many people have been using over hundreds upon hundreds of years. Now जो हमारे गेस्ट है, he's been practicing Ayurveda for the last 36 years. He's based in The Hague in Holland and he's the director of the AGN and Estra School of Ayurveda and Clinics, and he's written more than 35 books on Ayurveda. Now इनकी जो expertise है, it's based on Ayurvedic treatment and also Pancha Karma counseling and also anti-aging. Yes, I'm joined with our very special guest of the day today, the lovely Dr. Anil Mehta here on ZEE Companion. Dr. Mehta, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. Thank you so much for joining us on the show. मैंने सोचा क्यों ना हम शो की शुरुआत एक ऐसी बात पे करें या एक ऐसी टॉपिक हम लोग इस शुरुआत पे करें which is something that affects many people at home, और वो है high blood pressure. यानी कि hypertension. Hypertension की क्या reasoning है? Why do people get high blood pressure? You see, to understand, first we have to know what high blood pressure is. जी. As the word says itself, blood pressure, it means that pressure exerted on the wall of the arteries is blood pressure. If it's more than required, it's not good. If it's low than required, it's not good. So once our heart pumps, it exerts a typical pressure on the wall of the arteries. So normally it should be 120 to 80. If it's a little more than that, it means your heart has to work extra. And that can lead to so many problems. It can lead to stroke, it can give a lot of heart problems, heart attack, things like that. So we have to understand why it happens. So blood pressure is of two types. It's systolic. When it contracts the upper limit like 120/80, that is systolic pressure. So it means when heart is active, it creates a typical pressure, and when heart is at rest, there is diastolic pressure. So that is about 80. So that should be the normal pressure. ठीक है. So Dr. Mehta, आपसे बात करना चाह रही थी about, अभी तो हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, लेकिन लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट सम ऑफ द थिंग्स कि हम क्या कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को अवॉइड करने के लिए. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड डू? You see, high blood pressure is because that heart has to work extra. In which condition hearts work extra, that we have to understand. So our blood vessels, they are going to face that pressure. If blood vessels are not good, if the wall of the blood vessels is not good because of the cholesterol, then we have to treat cholesterol. If it's because of the tension, stress, then we have to treat the stress. Because what happens when there is stress, our heart has to work extra. Our body has to secrete a typical type of hormones. In that is vasoconstrictor. That means that blood vessels are going to contract. So it's then little volume, it's getting narrow. So blood pressure can't go through. So there are different reasons and we have to treat it also differently. But most commonly what we see, a lot of times there is plaque in the blood vessels. That is because of the cholesterol, and that is also because of not having complete food. What we say? Food के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन I just want to remind you कि अभी on ZEE Companion we are talking all about Ayurveda. आज हमारे शो का हेल्थ डे है and we welcome all of our callers. अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, you're more than welcome to contact us, as well as English and other languages as well. Dr. Mehta is very well acquainted with the numerous languages here and he has a vast array of experience, जिसकी वजह से we are doing the show today based on popular demand. इसलिए मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि if
you want to get in touch, do pick up the phone and get in touch with us now. Our free phone numbers are below the screen. लेकिन हमेशा की तरह अगर आप रात के वक्त या फिर सुबह सवेरे देख रहे हैं, I'm really sorry, you won't be able to get through to us because you're watching the repeats. But Dr. Mehta, अभी आप हमें एक अच्छी explanation दे रहे थे about high blood pressure, obviously इसकी क्या वजह है, लेकिन हम घर पे क्या अपने लिए इलाज रख सकते हैं या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा अगर blood pressure high हो जाता है उसको हम नीचे कैसे ले आएं? Yeah, so most common reason for the high blood pressure is cholesterol. So cholesterol is because of not having good fats. So our body has got two type of fats, that is HDL and LDL. HDL we need. HDL means high density lipids. That is what giving protection to our blood vessels that we need. So LDL is low density lipids that we should not be having. So there are food what we should avoid, and there are foods what is HDL increasing that we should be having. So one should know. So it's for example, fish oil, omega-3, our clarified butter, what we call desi ghee. These are all HDL increasing fats. One should have to have that to make that blood vessel strong to face that pressure. Okay. So this is one of the things what we can do in our food. And secondly, we should not be eating food what is very dry in nature. So only salads, cold things, not cooked food. People, those who want to reduce their weight always, they are having very little food, not complete food, not nutritious food. With them, there is a problem that the plaque, what in the blood vessel is, that tends to get dry. Whensoever that get dry, it can rupture. Whensoever it rupture, then our blood platelets comes there, and the blood platelets come, and that makes a little nodule. So that nodule can be very, very fatal. That can get to the coronary arteries, that can block coronary arteries, and that can block a typical part of the heart, and that cause high blood pressure and things like that. So food plays very, very important role. And of course, what I earlier told you, that stress is the reason, because in the stress our body secretes adrenal type of hormones that gives vasoconstriction. And so that we should avoid with yoga, with meditation, with lifestyle, with maintaining your diary, that you should be doing only things what you can do. You should not be taking much more on your shoulders. So we should have a lifestyle what gets along with your nature, but get along with your. मैं यही आपसे पूछने वाली थी क्योंकि जिन लोगों के busy lifestyles हैं, जिनकी families हैं, जिनके पास jobs हैं, it's not easy to juggle meditation, yoga. तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि how important is it, जो हमारे viewers आज देख रहे हैं, how important is it to make time for ourselves, अपने लिए time करना, अपने meditation के लिए या फिर अपने लिए थोड़ा quiet time करना कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए? It's very, very important. It's one of the major reason that not giving time to yourself. You see, nowadays our lifestyle, that is one of the reasons that we are gaining weight. We are not doing exercises, we don't walk, we don't do things for ourselves. So obesity is one of the reasons. Then smoking is one of the reasons, and not having complete food, not having good fats. So these are all the reasons one can correct himself by having complete food and HDL and avoiding LDL. That's the low density lipids what I told you. डॉक्टर मैं मैंने की पढ़ा था कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको ठंडी चीजें खाना चाहिए और ठंडी चीजें पीनी चाहिए. क्या ये सही है या गलत? No, not always. Not always. The high blood pressure can be to the different type of persons. If it's to the pitta person, pitta is very haughty in nature. So they should take little less spices and they should take cold aggravating things, but it's not always good for them. But there is one very, very good thing, that is celery. Celery we can use in our, so people having high blood pressure, they should use celery in their food regularly. Gond katira, that is a typical gum, they should use that.
and taking milk. Milk is cooling. Milk is very, very cooling. At night they should take milk. So, and not to forget that they should have long walks. Okay. So that's very, very important. Time for themselves, yoga and meditation. These are the techniques that you can keep stress away from you. Okay. जैसा आप जानते हैं हम लोगों का आज हेल्थ डे है. हम सिर्फ ब्लड प्रेशर पे ही बात नहीं करेंगे. इट्स एन ओपन हेल्थ डे. यानी कि अगर आपका कोई भी सवाल हो जिसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन चाहिए या फिर एडवाइस चाहिए फ्रॉम आवर गेस्ट टुडे, डू पिक अप द फोन एंड गेट इन टच विद अस. वी जस्ट स्टार्टिंग विद ब्लड प्रेशर, लेकिन वी कैन कवर एनी टॉपिक दैट्स इंपॉर्टेंट टू यू एट होम. डॉक्टर मेहता, हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन अब लो ब्लड प्रेशर पे आते हैं. Gosh, I can't speak. जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह क्या है? Yeah, you see, low blood pressure is that your body organs, they are not getting good enough food. Right. So blood pressure, with the blood pressure we are giving oxygen and all body, all nutrition to all the organs. It means that not all the organs are getting adequate food stuff and they can't function. It can be fatal. People most of the time they feel dizziness. They don't have energy. If they have to move, they have to get up. They can not see well, darkness before eyes. So these are all the symptoms that can be very fatal because the area that are quite far from your heart, like our fingers, feet and brain, this is quite far from the heart. So it's not getting food adequate because going up is difficult. Heart is to pump, bringing blood till here, it needs a typical pressure. If it's low, it means your heart, your brain is also not getting food. Your periphery area of feet and hand, they are not getting, it will be cold. So these are very, very, it can be very fatal. Okay. So what we have to do, we have to give something what stimulates. We have to give something what increases volume of your blood. By giving salt, we increase the volume of the blood. That blood quantitative, it increases. So that if heart pumps, it's going everywhere in every part of the body. So salt consuming is very good, and we should give them black pepper and caffeine. Blood pepper and caffeine, they are stimulants. Okay. So we have to give stimulant to the body. So giving oil massage to our body, just self massage, just by mustard oil or olive oil, they should rub them in. Rub them in. So that increases, that stimulate caffeine. This and nutritious diet. Okay. So protein, carbohydrate, full diet. So mostly we see that people, those who are underweight, they are having tendency to get low blood pressure. It means that all the body tissues are quantitative, they are not enough. So this water in the blood is also one of the ingredient of our body. So that is also not enough. So that way they get low blood pressure. So we have to give stimulant, hot things, spices, black pepper, salt, clear soups with ghee. That's very, very good tip. Okay. Around 4 o'clock, they must take clear soups, right? Bouillon, we say in Dutch, bouillon, and with one. So here we'll call it a broth. Yes. Yep. So with 1 spoon of ghee, clarified butter, salt, and black pepper, is very, very good. And they should go for nutritious diet, complete diet, protein, and they should not go for reducing their weight. Okay. I'm going to ask you a few more questions about low blood pressure. लेकिन हमारे पास एक कॉलर है जो आपसे बेताबी से बात करना चाहते हैं. रमेश मुरादाबादी, वेलकम टू ZEE कंपेनियन. हाँ, देखिए मैं डॉक्टर मेहता से एक ये सवाल करना चाहूंगा कि जब मैं टेलीविजन के सामने बैठता हूँ तो मैं जूस के कार्टन अपने पास रख लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं जूस पीता रहता हूँ, पानी की जगह जूस ज्यादा पीता हूँ. अब जो मुश्किल है और जो मैं चाहता हूँ डॉक्टर मेहता की तवज्जो, क्या तरीका ऐसा हो जो मुझे बार बार पेशाब के लिए न उठना पड़े, और मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं जब बार बार उठना पड़ता है तो मेरी नींद टूट जाती है. जी. डॉक्टर मेहता
कोई तरकीब मुझे बता सके तो मैं बड़ा एहसान मानूंगा उनका। जी जी जनाब नमस्कार। देखिए इनपुट एंड आउटपुट दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। इफ योर इनपुट इज टू मच ऑफ कोर्स बॉडी हैज टू डिलीवर दैट अगेन। सो आपका जो क्वांटिटी इनटेक है वो कम होनी चाहिए और शाम को 7 बजे के बाद लिक्विड कम लीजिए। और एक बहुत अच्छी दवाई है हमारी आयुर्वेद में, वो चंद्र प्रभावती या शिलाजीत के नाम से आप कुछ भी लीजिए। ये आपके यूरिनरी ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करेगा, ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करेगा, सो दैट ब्लैडर कैन होल्ड यूरिन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। एंड देयर इज वन एक्सरसाइज व्हाट आई कैन टेल यू एंड इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, दैट यू हैव टू कंस्ट्रिक्ट योर एनल मसल। So just sitting, nobody will see that. Just constrict it and lose it. Constrict it, lose it. Do 25 times a day. 1, 2, 3, like this. So nobody is noticing that, and you have done your exercise while sitting. And don't take much water, much liquid after 7 o'clock, and take that Shilajit and Chandra Pravati, and I am sure this is going to give strength to your bladder to hold much longer the urine or water stuff in that. Okay. I hope it's clear to you. रमेश आपके फोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलते अपने अगले कॉलर की तरफ, who's waiting online. Dinesh, welcome to ZEE Companion. हेलो नताशा, डॉक्टर मेहता। हाय दिनेश, आप क्या पूछना चाहेंगे आज हमारे मेहमान से? माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पेरिफेरल एडिमा, swelling in the pit. Yes. I get swelling in the pit. What should I do about it, and what are the causes for that? Yeah, causes can be numerous. It can be because of the kidney, it can be because of the liver, and that your GP should get your blood test and other investigations. Only then we can come to know. But it should not be leave like that only. You must go to GP to find out. But I can give you very simple technique that you must not hang your legs. It should be always on the table. It's not that polite, but one should do that. And take celery and dashmool. You can find a decoction of dashmool from any store here in UK, and that's very, very good for internal shoth. Shoth we say to edema. So then get it checked by GP. Is it because of the liver or is it because of the kidney? So that is the right way to treat this. Okay, Dinesh, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब को मिल गया होगा. Thank you very, very much for your call. Let's go to the next caller now, who wishes to remain anonymous, which is absolutely fine with us. So welcome to ZEE Companion. Hi there. Hi Natasha, okay? Hi, I'm very well, thank you. आप क्या पूछना चाहेंगे आज हमारे गेस्ट से? I wanted to ask 2 questions to Mr. Mehta, please. Ask away. Ask away then. One is, one of my friend, daughter is having eczema on both the legs, and she's only, say, 9-10 years old. She's suffering a lot with that. So what can be done regarding that eczema? You see, eczema is mostly because of the allergy. She might be allergic to one or other stuff. If you have got cat, dog, carpet. No dog, nothing like that. Achha. Okay, but there are a lot of stuff in the house. One can't see that. But it's a reaction of the body to some allergens. It's a reaction of the body to some or other what body can't have that. So what you can do is very, very safe, I will tell you. You should make blood pH value basis we call the alkaline. Alkaline is the right word for that. You have got acidic or alkaline. So one should make his blood alkaline by having cucumber every day. 1/3 of cucumber. You must take. Yeah, and milk is also alkaline. At bedtime, going to before sleeping, she should take 1 glass of milk and soda bicarbonate. Soda bicarbonate she can buy, and every day 1 gram, that is a half teaspoonful, with normal water, stir it and just drink it. So this is home remedies, and besides that, she should buy Sirish. Sirish is Albizia labec. Is the Latin name of one of the herb. You can buy from any store. Albizia labec. Hindi name is Sirish.
So you can buy in London very easily, I'm sure of that, and give for few months. So this will reduce it's antihistaminic. And what home remedy I forgot to tell you, that is curcuma, haldi we call that. Curcuma is also very good, and you can make golden milk at night. What I told you, milk with a little bit haldi, that is golden milk. So you can try these home remedies. Okay, so thank you very much for your call, Anonymous. Dr. Mehta, just coming back to जो दूध हल्दी जो है, उसकी सिर्फ यही benefit नहीं है जो आपने अभी बताया, कि और भी अलग-अलग चीजों के लिए फायदेमंद this works in a lot of diseases. It's anti-diabetic also. Curcumin, haldi जिसको हम बोलते हैं, haldi is very good for diabetic patients as well. So it's antihistaminic. So it's anti-cancerous. So this has got a capacity to kill the newly formed blood vessels. What in cancer it happens. So it is going to kill that. It's going to close that. Okay. So it won't go further. Our next caller who's waiting online, we do have Anonymous. Anonymous, welcome to ZEE Companion. हेलो जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आप क्या पूछना चाहेंगे आज हमारे गेस्ट से? जी, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहूंगी. डॉक्टर साहब नमस्कार. जी नमस्कार. जी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, रिसेंटली मुझे मंडे मॉर्निंग में अचानक आँख खुली. तो आई वॉज फीलिंग कि माय गॉड ऐसे हो रहा है जैसे कोई भूचाल आ गया. मुझे चक्कर आने लगे और मैं बड़ी घबरा गई. मतलब जैसे मेरी आँख खुली तो मुझे बड़ी घबराहट हुई कि ये क्या हुआ है. इसमें धीरे धीरे हिम्मत करके थोड़ा बैठी, बट आई वॉज फीलिंग वेरी स्केर्ड बिकॉज दैट नाइट आई वॉज अलोन इन बेड एंड कोई घर में भी नहीं था. और फिर मुझे घबराहट हुई. फिर मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे बैठ के मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया और थैंक्स टू देम वो आए, मेरी हेल्प करी. उन्होंने आके एम्बुलेंस भी बुला ली. उन्होंने आके चेक किया. फिर मैं बड़ी हैरान हुई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये चक्कर क्यों आए. Yeah, mostly this type of things happen जो एकदम accidentally और अचानक जो चीज होती है. This is because of the cervical spondylosis. So suddenly one of other vertebra of your neck that must have got different because of the position. That must have stressed one or other nerve, what is supplying all that oxygen and blood supply to your brain. So that's why it has happened. So you must change your pillow. You must go to physiotherapist. He will give you one type of collar, we call that collar, so that your neck get fixed into, so that you can't move freely. So physiotherapist will measure that and he will give you the collar of that size, so that your vertebrae that get fixes at one place for few hours. So then bones and our vertebra, they have got one condition, they have got one quality, that they will grow there if it's placed for few hours there. So that you must try. So I think that's the reason. You must. मैं कुछ मेरे जी सॉरी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे नी में पेन और शोल्डर पेन भी, तो मैं अक्टूबर से ना कुछ ये ले रही थी प्राइवेटली ऑस्टियोपैथ एंड वो. तो लास्ट जो विजिट हुआ मेरा फर्स्ट वीक में, तो उसमें कुछ मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरी नेक के दोनों तरफ पॉइंट जो दबाए गए, आई वाज फीलिंग कि कुछ ऐसा है. पहले तो मेरे पास प्रॉपर पिलो है नेक वाला. कुछ दिनों से मैं बिल्कुल फ्लैट पिलो यूज कर रही थी. So that अचानक हुआ तो आई फील सो स्केयर्ड. तो फिर डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक किया, वो बोला हाई है. और वो गोली दिया फिलहाल तो आपको you must follow that, but this is technical problem. What I told you, this is cervical spondylosis, and that has to be corrected technically. That has to be corrected technically by putting that collar and placing that on the right position and having good posture in daily life. Only that helps. That helps more than given medicines in this case. Okay. चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ जिनका नाम है कुलदीप. Welcome to ZEE Companion.
जी थैंक यू। हाँ जी कुलदीप, आप क्या पूछना चाहेंगे आज डॉक्टर मेहता से? पता क्या, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, जब आप हिंदी में बात करते हैं ना तो अच्छा लगता है, तो डॉक्टर साहब अंग्रेजी क्यों बोलते हैं मेरे को? डॉक्टर मेहता हिंदी में भी बात कर सकते हैं। मैं पंजाबी च भी गल कर सकना जनाब। जब बुजुर्ग को बात करता है तो उसको इंग्लिश तो नहीं आती है। चलो मैं पंजाबी च गल करना थोड़े नाल जनाब। हाँ मैंने पंजाबी गल करता तो बढ़िया, मैं चंगा लगता, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है जनाब। कुलदीप जी का सवाल किए आज। मेरा सवाल है ना, मेरे ना ये लैग दे ना शुगर करके मेरे ब्लॉक है नाड़ा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਸਟਰਾਲਿੰਗ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰੇਜ਼ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਰੋਬਿਓਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਰੋਬਿਓਨ ਫੋਰਟ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਕਰੋ। B1 B6 B12 ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਊਰੋਬਿਓਨ ਫੋਰਟ। तो हर डायबिटिक पेशेंट ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਲ ਮਸਾਜ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿਓ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ करना करके दसना मैंने की फर्क होया। Okay. कुलदीप जी आपके फोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर मेहता ने आपको भी और हमारे जो अलग अलग व्यूअर्स जिन्होंने फोन भी किया, और मैं फिर भी रिट्रेट करना चाहूंगी कि इफ यू हैव एनी वरीज और कंसर्न्स, या फिर आज कोई भी ऐसी बात हुई हो जो हम कर रहे हैं with any of our guests or in fact callers on the show, please do get in touch with your GP for any advice on guidance in relation to your medical condition and what we're speaking about on the show. चलिए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। जब वापस आएंगे हम और काफी सारी बातें करेंगे हमारे मेहमान से और आपके सवाल इनके सामने पेश करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने ये छोटे से मैसेज के बाद। जी कंपेनियन के सेकंड हाफ में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं नताशा और आज हमारे शो का हेल्थ डे है। जैसे आप जानते हैं, अगर आपने पहला हाफ देखा ही होगा, आज हम बात करें स्पेसिफिकली अबाउट योर हेल्थ कंडीशंस इन रिलेशन टू आयुर्वेदा। और मुझे बेहद खुशी है, आई एम जॉइंड विद आवर वेरी स्पेशल गेस्ट हियर ऑन द शो, हु इज बैक बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड, जो पिछले कई इनफैक्ट 36 ईयर से भी ज्यादा इनका तजुर्बा है इन आयुर्वेदा, एंड ही इज फ्रॉम द हेग इन हॉलैंड। नाउ ही इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द AGN and Estra School of Ayurveda and Clinics and has written over 35 books on the subject. जी मैं बात करी about a very special expert जिनका नाम है डॉक्टर अनिल मेहता। Welcome back once again डॉक्टर मेहता to ZEE Companion। अब आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि अभी फिलहाल हमारा शो 100% लाइव है, तो अगर आप डॉक्टर मेहता से कोई भी बात करना चाहते हो अपने लिए या किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए, आप कोई भी एडवाइस लेना चाहते हो या गाइडेंस लेना चाहते हो, प्लीज डू पिक अप द फोन एंड गिव अस अ कॉल। हमारे अलग अलग मुल्कों के अलग अलग नंबर्स आपके स्क्रीन के नीचे आपको दिखते ही होंगे। डू गेट इन टच विद अस, लेकिन चार्जेस में अप्लाई अगर आप मोबाइल
टेलीफोन से हमसे बात करना चाहते हैं। चलिए डॉक्टर मेहता, वी डू हैव कॉलर्स वेटिंग ऑनलाइन, लेकिन इससे पहले कि हम कॉलर की तरफ जाएं, हमें एक ईमेल आया फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स जिनका नाम है शाहीन। इन्होंने जब आप पिछली दफा हमारे शो पे आए थे उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा था प्लीज नताशा डू आस्क दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर मेहता। तो मैं आज इनसे ही शुरू करूंगी फॉर द सेकंड हाफ। अब शाहीन जो शी इज 56 years old और कहती हैं कि 2009 से मुझे लंग डिजीज है जिसका नाम है सार्कोइडीज। सॉरी अगर मेरी मिसप्रोनाउंसिएशन हुई है इसके मामले में। कहती है मेरा इलाज भी चल रहा है और मैं स्टेरॉइड्स भी ले रही हूँ जिसका नाम है प्रिडेस्नो। कहती है मैं रोज 2 गोलियां खाती हूँ लेकिन आराम फिर भी नहीं आता, मुझे सांस फूलने की बड़ी प्रॉब्लम है और कहती है मुझे खांसी भी होती है और वो कम लेने का नाम भी नहीं ले रही। तो कह रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और ऑब्वियसली उन्होंने कहा है इनफैक्ट कि मुझे शुगर की बीमारी भी है। So, क्या कर सकती हैं वो? You see, this is not that simple disease. Sclerosis, this is multi-organ disease. ये lungs में हो सकता है, skin के नीचे हो सकता है. It's because of inflammation, a sort of nodule, tumor that's being formed. Because white corpuscles, white blood corpuscles, they come and fight. They come and fight, and they can't win, and they die, and that makes a nodule or tumor type of things that can be in the lungs. ये स्किन में आ सकता है और कहीं भी ये जा सकता है. मल्टी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं. So this is not that simple disease to cure with home remedies. That steroid what you are taking, that's the only remedy, I'm afraid. But at home you can do a lot of things yourself to protect your lungs so that this process should not go further. तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो है काली मिर्च. Kali mirch, every day you must take 6 to 7 early in the morning with water, empty stomach. बिना कुछ खाए भी 6-7 काली मिर्च आपको लेना है. और गोडूची नाम की एक हर्ब है, उसका नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया. टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया वो आपको इंग्लैंड में मिल जाएगी. उसका नाम है गुडूची, गुलोय भी बोलते हैं उसको. वो आपको किसी रूप में भी मिल सकती है, गोली, कैप्सूल या फ्रेश भी मिल सकती है. घरों में, इंडिया में तो घरों में बेल की तरह लगती है ये, तो उसका डिकॉक्शन बना के पी सकते हैं. दैट इज द मेडिसिन फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज. तो वो वाइट ब्लड कार्पसल्स को भी ठीक करेगी, रिड्यूस करेगी नोड्यूल्स को भी, और काली मिर्च इसको आगे नहीं बढ़ने देगी. तो हल्दी का भी प्रयोग आपको करना है, बट इन ए लिमिटेड डोज, नॉट दैट एवरी डे यू शुड टेक मोर देन 1 to 2 grams. सो इट शुड बी इन एडिक्वेट डोज आपको करना है, और आपकी अपने कंडीशन को भी बढ़ाना है. यू मस्ट कीप ऑन वॉकिंग, यू मस्ट रिस्टोर योर कंडीशन. तो आपको खुद ये काम करने, और स्टेरॉइड को भी आपको लेना है. तो अनलकीली दिस इज नॉट दैट गुड डिजीज टू टॉक अबाउट, क्योंकि आपको डायबिटीज भी है और भी ऑर्गन है. तो यू मस्ट गो टू जीपी विद रेगुलर चेकअप ऑफ ऑल दिस ऑर्गन्स. थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन डॉक्टर मेहता. चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, who's waiting online patiently. Anonymous, welcome to ZEE Companion. हेलो ZEE Companion, गुड इवनिंग. हाय, गुड इवनिंग. आप क्या पूछना चाहेंगे आज हमारे गेस्ट से? हेलो डॉक्टर मेहता. जी नमस्कार. टॉक टू यू Sure. about MS suffering जी. about over 10 years. जी. And, I am in a position that I cannot walk now. I do not have balance, and I'm wheelchair bound. And like another question is regarding diabetes. My diabetes is on borderline. I would like to know what to take, what to eat, my diet, and all so on. Because I have these 2 things, and it is hard to control. Yeah, I do understand. You see, you have got 2 diseases, but don't go along each other. You know, in MS you can't walk, and because you can't walk, diabetes is getting worse. So MS, real reason is not known yet, but we know that our mind, our brain cells, they are not producing enough dopamine, enough neurotransmitters. So one should do something for that. In our daily life, we can use clarified butter.
vitamin D3. These are the sources to keep our brain cells healthy so that they should produce enough neurotransmitter. With neurotransmitter production only you can coordinate and you can walk. And secondly, because you can't walk because of the MS, and walking is the only treatment what we suggest patient in diabetes. So I will suggest you to take these things, and in market you can buy conch. Conch is an herb. Latin name is Mucuna pruriens. So this is the product what increases your neurotransmitter. You must buy and use it. Okay. I wish you success. Okay, Anonymous, आपके फोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा. Let's move on to our next caller, who's anonymous, not the same one as before, लेकिन another anonymous. So welcome to ZEE Companion. Hi there. It's just my husband is not able to listen on both the ears. We went to hospital, we went to doctor, surgery, everything. We tried two types of drops. One was nasal, one was ear drops. But nothing is working much. And we went today and the doctor gave another antibiotic course. Which one he has done it before 1 week. So he is not pleased with that taking another inoculation course. So what can be done? Okay. All right, Anonymous, ये आपके अपने husband के बारे में बात कर रही है ना? थोड़ी सी हम. Yeah. Okay, so Anonymous saying that her husband's having problem hearing, and he's been to the doctor, he's been given antibiotics, but he's still having problems trying to hear. So what can good option? Yeah, actually this is a very specialistic case. One should know the reason behind why he's not listening. So something should have happened in between our middle ear. So infection because of the swimming, because of the water. So these can be the reasons. So what you can do, you can buy bilva oil. Bilva oil is the only thing for this what we have in Ayurveda, and you should not put in the ear, but you should put in the nose, because this is connected. We are not going to put bilva oil here, but through the nose it's going to treat that. But keep on taking antibiotic, that's very, very good. You should not stop with that, and infection should be cured, and the rest bilva oil you must try. Okay. Anonymous, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा. डॉक्टर मेहता, आपने भी कहा है कि अगर किसी को कान में प्रॉब्लम है तो नाक से उनको तेल करना सूंघना चाहिए या रखना चाहिए. अब मैं जब छोटी थी और मेरे कान बंद होते थे तो मेरी मम्मी तो घसीट के लाई शीशी से गरम just warm तेल in my ear. तो उसमें वो नहीं, because इन्होंने अभी बताया कि there is infection in the ear. So if I am going to put oil or something like that, it may increase that infection. So we should not be putting anything, oil or things like that without noticing. तो उसको aggravate नहीं करना. Aggravate नहीं करना. So that's why I am going to give that effect through the nose. ठीक है. Okay, thank you so much for answering that and clarifying that. Let's go to our next caller now, जो इंतजार कर रहे हैं very patiently. Mr. Singh, welcome to ZEE Companion. Hello. हाँ जी, Mr. Singh, welcome to the show. क्या पूछना चाहेंगे आज डॉक्टर मेहता से? Hello, Mr. Mehta. Talk to Mr. Mehta, please. जी जनाब, speaking. Welcome. Yeah, मैं हिंदी में बात करता हूँ. मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है. कॉन्स्टिपेशन की? हाँ, कॉन्स्टिपेशन की मेरे को बहुत पुरानी है. जी. मैंने ट्रिफला और कई चूरन चावल खाता हूँ. टाइम पर ही काम करती, जांच नहीं करती. कोई ऐसी है जो जी रेगुलर काम करे? हाँ, उसका एक है, मैं बताता हूँ आपको कि हमारी बॉडी इतनी परफेक्ट मशीन है, परफेक्ट है अपनी बॉडी, कि इसमें अगर हम एक इसबगोल अगर हम खाएंगे बॉडी उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगी. इट हैज टू थ्रो इट अवे. सो सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आप इसबगोल लीजिए. प्लंटागो ओवाटा बोलते हैं उसको, एंड हस्क भी बोलते हैं उसको. रात को पानी में का छिलका. हाँ जी, इसबगोल का छिलका. अब जब हम इसबगोल का छिलका लेंगे तो बॉडी उसको पहचानेगी नहीं, उसको बाहर फेंकना ही है. तो विद द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग दैट प्लंटागो ओवाटा अवे, ऑल द stools will come with that. आप समझे मेरी बात? तो इसबगोल आप जरूर लीजिए, और ट्राई टू सिट ऑन इंडियन टॉयलेट.
So with that, you are going to form a typical position of your small intestine so that it comes out very easily. So it's very Indian toilet आप समझते हैं कि अपने पाँव पे बैठना. So that's very good. प्रॉब्लम है ना, इसलिए इतने में बैठ नहीं सकते ना. हाँ, तो फिर ये लीजिए जो मैंने बताया आपको, प्लंटागो वाटा इसबगोल, और पानी की क्वांटिटी आपकी पूरी होनी चाहिए. नमक का काम बहुत है इसमें. रात को सोते समय दूध भी पीना चाहिए. दूध इज लिटिल लैक्सेटिव, और जब आप गर्म कर देते हो तो दैट्स मोर लैक्सेटिव. तो गर्म करके दूध पीजिए. पानी की एडिक्वेट डोज होनी चाहिए सारे दिन में. और इसबगोल का छिलका और मैदे की चीजें खाना बंद कर दो. रोटी भी जो है वाइट ना हो, ब्रेड ना वाइट हो. तो ये अपना जो उस ब्राउन आटा जो है, ब्राउन ब्रेड है, उसमें भी ये अपना हस्क होता है, ये छिलका होता है, जिसको आप बोलते हैं प्लंटागो वाटा या इसबगोल. ये सारा उसमें चोकर जिसको बोलते हैं वो उसमें होता है, वो काम करता है. मिस्टर सिंह, आपको फोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा. डॉक्टर मेहता, अगले कॉलर के जाने से पहले अभी आपने कहा कि पानी पीना बहुत जरूरी है. जी. जितने भी शोज हमने किए हैं, चाहे वो हेल्थ हो, ब्यूटी हो, हर कोई कहता है पानी पियो पानी पियो. अलग अलग आर्टिकल्स लिखे गए हैं. कोई कहता है कि 1 लीटर पीना चाहिए, कोई कहते हैं 10 ग्लास पीना चाहिए. लेकिन आप बताइए कितना पानी हमें पीना चाहिए? एक्चुअली अपनी बॉडी जो है ये आपको इशारा करती है आपको क्या चाहिए. सो फिर भी अगर हम ऑफिस गोअर है, ज्यादा फिजिकल काम नहीं करते, तो इंक्लूडिंग टी, कॉफी, मिल्क एंड आवर वेजिटेबल्स, फल फ्रूट जितने भी हैं, सो 1.5 लीटर इज मोर देन इनफ. नॉट गिविंग स्पेशल अटेंशन टू दिस इशू, वी जनरली टेक मोर देन 1 लीटर बिकॉज इट्स इन वाटर इज इन वेजिटेबल्स, इट्स इन लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट वी कंज्यूम, टी, कॉफी. So it's not that we are not, but there are people, they forget, they don't take, they transpirate more than their intake is, so that they have got tendency to get dryness inside. Okay, thank you for answering that question. Let's go to the next caller who's waiting patiently online as well. Anonymous, welcome to ZEE Companion. Hello. हाँ जी, welcome to the show. आप क्या पूछना चाहेंगे आज डॉक्टर मेहता से? Yes, Pasha ji and Dr. ji. Hello. जी नमस्कार. To ask. Yes. ये जो ocular migraine मेरे को होती है. जी. और एक साइड से, आंख के एक साइड से ऐसे लगता है कि zigzag है और शीशा हर तरफ बहुत सारी लाइट होती है. तो ये क्यों होती है? Yeah, according to Ayurveda, this is because of the hormonal disbalance. May I ask your age, please? 63. 63, okay. And since when you are having these problems? 2 साल पहले हुई थी. और उसके बाद 2-3 बार हुई है. फिर बीच में 1.5 साल से कभी नहीं हुई. अच्छा, तो क्या लास्ट वीक फिर से अचानक. Okay, so there must be trigger, aggravation trigger. It can be because of the acid production in the stomach. So you must have taken few things जिसने आपका acid production को aggravate कर दिया है. So take few days मुक्तावटी. मुक्तावटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे किसी भी स्टोर से. और सेकंड गोंद कतीरा लीजिए. हाँ जी, कौन से स्टोर से ये मिलती है? ये आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी जहाँ पे आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती है. आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे ग्रोसरी शॉप से, आपको मिल जाएगी वहाँ से. और गोंद कतीरा बड़ा अच्छा काम करेगा इसमें. हाँ, 2-3 दाने गोंद कतीरा के रात को पानी में डालिए, सुबह वो बहुत ज्यादा बन जाएगा, फूल जाएगा. एंड जस्ट टेक दैट विद लिटिल बिट हनी और शुगर, ब्राउन शुगर. So it's a sort of pup we are going to make that. Take that and it will be okay. It's because of the acidity. You must have taken few things जिसने ये trigger का काम किया है इसमें, and it will subside with that. And try to go to your toilet twice a day, in morning and also in the evening, so that all the acid produced, you are throwing it away. You are not keeping it in the body so that it is absorbed again and is going to trigger again. So try to go to toilet twice a day. Okay. And
अनोनिमस, आपके फोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। वंस अगेन मैं आप सबको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जितनी भी एडवाइस और गाइडेंस डॉक्टर मेहता हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर गिवन हियर ऑन द शो। मैं जानती हूँ वक्त नहीं है ज्यादा पैक खोला, लेकिन जितना भी टाइम है वी आर ट्राइंग टू हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन। अगर आपका कोई भी सवाल हो, डू पिक अप द फोन एंड गेट इन टच विद अस नाउ। लेकिन इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, प्लीज डू गो एंड सीक एडवाइस फ्रॉम योर GP as well if you're worried about having any side effects to anything that we may be speaking about on the show today. डॉक्टर मेहता, हमें एक और ईमेल आया था फ्रॉम वन ऑफ द प्रीवियस शोज जिसमें एक व्यूअर ने पूछा है, व्यूअर का नाम था जानवी। उन्होंने ये पूछा है कि मुझे मेरे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने बताया है कि टंग स्क्रैपिंग मेरे जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टंग स्क्रैपिंग क्या हम सबके लिए जरूरी है और वाकई इसके इतने फायदे हैं जितना जानवी ने बताया? जी 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 बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी गुड इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर गिविंग टू योर व्यूअर्स। यू सी, लाइक वी क्लीन आवर teeth every day, we have to clean our tongue as well. It's called halitosis. Halitosis is a million of bacteria, they grow on our tongue every day because we eat protein, carbohydrates and a lot of combination food, and that is going to ferment, and that makes, and it's quite normal that we produce that so many millions of bacteria on our tongue, but it has to be clean. That with you have to scrap it with a tongue cleaner. They are typical. But in Ayurveda विधान है, आयुर्वेद में लिखा है कि जितना भी एडर मेटल होगा, जैसे सोने के बनते थे, I use personally of made of gold, my wife, my children. Okay. Or silver is good. You can make of chandi, copper, iron. Plastic is not good at all, but a lot of people they use plastic to scrap it. No, iron not at all. Steel not good. ये क्यों अच्छे नहीं है जो आप अपनी iron, steel और plastic? Because when we scrap, our blood, छोटे-छोटे जो cells है, that get damaged to that. अच्छा. So and that can get infection. Infection can be can occur. So if it's gold, silver, copper, steel, then it won't happen because it's clean. Its structure is soft metal. It's ader metal and it's not infectious. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट डॉक्टर मेहता। चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। आई थिंक इस सेगमेंट में तो बड़े अनोनिमस आ रहे हैं हमारे पास, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए एक और अनोनिमस के साथ हम बात करते हैं। वेलकम टू जी कंपेनियन। हेलो निपाशा, स्पीक टू डॉक्टर मेहता। जी आप बात कर रही हैं उनसे, क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार डॉक्टर मेहता, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि शिलाजीत और मुक्तावती ब्लैडर के लिए अच्छी हैं। न, शिलाजीत और चंद्र प्रभावती मैंने कहा था। जी, ओके। शिलाजीत और चंद्र प्रभावती एंड दैट वन एक्सरसाइज आई गिव यू, या ओके। ये आदमी और औरत दोनों के लिए ठीक है? जी, दोनों ले सकते हैं। और जिनको शुगर है, जिनको शुगर की कॉम्प्लिकेशन है, उनमें यह काम बहुत ज्यादा करेगी। ओके। और तीसरी बात, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है जी, तो वो भी ले सकते हैं? ब्लड प्रेशर के पेशेंट जी वो भी ले सकते हैं वो भी। पर ये कॉम्प्लिकेशन जो ब्लैडर वीक और ज्यादा यूरिनेशन का, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट को बहुत अच्छे से काम करेगी, दूसरों को भी करेगी, पर साथ में एक्सरसाइज भी करना है इसके लिए। ऑलराइट, अनोनिमस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, कॉलर एक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनके सवाल भी हम सुने और जवाब भी डॉक्टर मेहता दे। अनफॉर्चुनेटली वी weren't able to get them through, लेकिन फिर भी डॉक्टर मेहता आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, और वो है हमारे एक और व्यूअर ने हमें अभी लिटरली ईमेल किया। उनका ये पूछना है कि डॉक्टर मेहता मुझे लो ब्लड प्रेशर है, और आपने पहले हाफ में इसके बारे में काफी सारी बातें की थी, इनफैक्ट थोड़ी बहुत ही नहीं। उन्होंने ये पूछा है कि आपने कहा था कि सॉल्ट काफी फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन जिनको लो ब्लड प्रेशर है, मुझे भी है, लेकिन कितना सॉल्ट हमें खाना चाहिए? देखो, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, तो सॉल्ट लेस नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन प्लेस ऑफ सी सॉल्ट, वो होता है सोडियम क्लोराइड जी, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप हिमालयन सॉल्ट लोजिए, उसमें सोडियम नहीं होता, सो देन देयर इज नो रिस्क, यू कैन टेक लिटिल एक्स्ट्रा आल्सो। ठीक है, व्हाई सोडियम इज वाटर रिटेंशन, इट डज वाटर रिटेंशन जी। तो अगर हम ये लेते हैं हिमालयन सॉल्ट,
इसको बैरक सॉल्ट भी बोलते हैं और स्टोन का सॉल्ट भी बोलते हैं. दिस इज विदाउट सोडियम, इट्स विद पोटाशियम, सो इट्स नॉट डेंजरस एट ऑल. एंड टेक इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. पुट इन एवरीथिंग, बट टेक मिनिमम 1 cup of soup with salt according to your taste. ठीक है. So that is going to help. Okay. और जिन लोगों को फॉर एग्जांपल लो ब्लड प्रेशर है, सॉल्ट के सिवा वो और कुछ खा पी सकते हैं? जी. Stimulant we have to give. Caffeine is very good. They must take coffee twice a day. They should give massage to themselves. And black pepper also I told you. Spices I told you. These are all stimulant. But anything what's good for the liver, liver stimulant, like in the market you can buy any product for liver. Bringraj, we have got Live 52 or anything, black pepper, salt, spices, in kitchen what we use. These are all good. And giving massage to our body, that helps also. जो हमारे anonymous caller थे, unfortunately wasn't able to come through, उनका ये सवाल था कि जिन लोगों को incontinence है, जी, वो हमारे जो anonymous caller थे, they're over 65 और उनको incontinence की प्रॉब्लम है, वो क्या कर सकते हैं अपने incontinence को कंट्रोल करने के? क्योंकि उसका इलाज तो है नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं. Incontinence is because of lot of reasons. Bladder is not holding that urine, so it can be because of the prostate also. Prostate is going to push on that nerve. But brain thinks that there is enough urine, he must pass. So if he knows that it's not because of urine, then exercise what I told, that is excellent exercise for all that bladder problems. So by that you are going to make your bladder strong so that he can keep that urine for a longer period. So exercise is very, very good. And that's what Chandraprabha Shilajit, and get it diagnosed by your GP. That's the first step always to the treatment. If we know the reason, we can eradicate it also. Otherwise, just we are throwing in the dark something. It may help or it may not help. So diagnosis is very, very important. So just GP, ask your GP to diagnose that. Okay. Dr. Mehta, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. Thank you so much for coming on the show, giving some great advice and tips to our viewers at home. We really, really do appreciate it. All pleasure is mine. My respect and regards. Okay. आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन ने हमें फोन किया, ईमेल किया. उम्मीद है आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे. कल मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने with another special guest talking all about mortgages, buying properties and more. हमेशा की तरह अपना ध्यान रखिएगा और जी कंपेनियन देखते रहिए आपके अपने ही मनपसंद ZEE TV पे.